बम था, मिसाइल था, क्या था हमको नहीं मालूम था। ये टुकड़े सब ऊपर से आए हैं। यहाँ पे बस मेरा बेटा शहीद खून में लगभग पड़ा हुआ था। 14 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, 14 दिन पहले। In May of 2025, India and Pakistan exchanged air and drone strikes for 4 days. Most of the attacks were targeted at Kashmir, a disputed region that both countries claim but administer only parts of. 3 ड्रोन है, ये इस वक्त इन्होंने छोड़े हुए इंडियन आर्मी की तरफ से लक्ष्य बनाया, और चौथा हुआ है। But while the two nuclear-armed countries argued about who inflicted more damage, Kashmiris on both sides of the divide say they're the ones who pay the price. नुकसान होता है आम आदमी, जो गरीब हम जैसे मारे जाते हैं। ये लड़ाई झगड़े से कुछ भी ये हल नहीं है। Sanam and her family were sitting down for dinner near Uri in Indian-administered Kashmir when they heard an explosion behind their home. They had no idea that the moves they made in that moment would lead to their mother's death. मम्मा ने खाना निकाला, तभी सडनली हमारे पीछे ये ड्रोन गिरा, तो हम सब घबराहट गए। मेरी मम्मा ने मेरा हैंड पकड़ा कि चलो चलो। Sanam's family ran to the car outside their home. Her brother Saqib was in the car behind them. इधर मामा बैठी थी इस जगह में, यहाँ पे मामा बैठी, यहाँ पे सिस्टर थी, यहाँ पे सामान था। यहाँ से मामा इस साइड में थी, यहाँ पे कट हुआ, और उसके बाद मुझे लग रहा हार्ट को डैमेज कर रही, हार्ट और ये नेक। उसकी वजह से मामा को आवाज़ नहीं निकली, खामोश हो गई थी मामा। मामा के आंखों से आंसू सिर्फ टपक रहे थे। वो छोटी बहन की गोदी में बेहोश हो गई थी। पूरी सीटें पूरा भरा हुआ था खून से। वो हमारे पे क़यामत वाली रात थी। हमारे ऊपर बिजली जैसी गिरी, पूरी गाड़ी हमें ऊपर हवा में और फिर डाउन हुई नीचे। तब मेरी मम्मा का खून मेरे हाथों में था, आधा मेरे मुंह के अंदर, आधा मेरे मुंह पे। अंगार होते ना, वो उससे भी ज्यादा गर्म। वो बेटी क्या करेगी जब अपनी माँ का खून अपने हाथों पे लगा हुआ हो। पर शेलिंग तब भी स्टार्टिंग थी, तभी हमें इसका डर नहीं था। हम उस शेलिंग में भी हॉस्पिटल पहुंचे। When they arrived at the hospital, their mother was pronounced dead. मेरी आंखों के सामने अभी भी आ रहा है। फिर मामा अपना दर्द जो छुपाती थी, मतलब वो बीमार, मतलब कभी कभार वो बीमार हो जाती, हमें नहीं शेयर नहीं करती थी। मामा वो जगह थी मामा की। मामा सोई हुई थी, मैंने बोला मामा मुझे चाय चाहिए। एकदम से उठी, थकी हुई थी, उसी टाइम मुझे चाय दी। पर मुझे क्या पता मुझे लास्ट चाय होगी मतलब वो मेरी एक शील्ड थी, वो शील्ड टूट गई है। सबकी माएँ भी एक ही जैसी हैं, इसीलिए बोलती हूँ कि जंग ना ही करें, ऐसा कुछ ना करें। These 4 days in May were the most serious escalation between India and Pakistan in decades. The barrage of strikes came a few weeks after gunmen attacked a resort in Indian-administered Kashmir in April, which left 26 tourists dead. India accused Pakistan of helping facilitate the attack. Pakistan denied the accusation. Then on May 7th, India launched Operation Sindoor and fired missiles into Pakistan and Pakistan-administered Kashmir. जब पहला ब्लास्ट हुआ, इसकी इतनी ज़ोर की आवाज़ थी कि मैं खुद उठी। एक में साइड देखा तो ये कांच टूटा हुआ था। मैंने सोचा शायद आसमानी बिजली गिरी है। फिर मैं यहाँ से भागती बाहर आई तो इधर अभी मैं खड़ी थी, तो इतने में दूसरा आके लगा। जब वो ब्लास्ट हुआ, उसकी रोशनी इतनी तेज़ थी, मुझे समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। मेरे पापा ने कहा निम्रा भागो, इंडिया ने अटैक कर दिया। Nimra was injured after missiles struck the mosque she lives next to in Muzaffarabad in Pakistan-administered Kashmir. The Indian military said it was targeting armed groups, but Nimra doesn't believe this. वो साइज होते हैं कि यहाँ टूरिस्ट हैं, ये जो बोलते हैं ये झूठ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अपने महल्ले की मस्जिद हैं, हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन्होंने अटैक किया। तो जब मैंने देखा तो वो मीनार के बिल्कुल थोड़ा सी पास जाके लगा था, वो ब्लास्ट हुआ था। हिल भी ना, मैं स्टन खड़ी थी इस तरह। फिर आगे कोई शल वगैरह मुझे लगा। The missile attack on the mosque killed 3 people and left shrapnel inside Nimra's body. She says she has trouble bending down and can now only pray while sitting. वैसे नीचे नहीं हो सकती बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर नीचे होती फिर दर्द होता है, और बाजू थोड़ा सा ऊपर नहीं कर सकती ऊपर। Nimra says the doctors haven't removed the shrapnel because they're concerned it could shift deeper in her body and cause further injury. अब थोड़ा बहुत जाते वक्त, स्कूल जाते वक्त भी, रात को भी डर लगता है कि इंडिया का कुछ पता नहीं है, वो दोबारा अटैक कर सकता है।
Kashmiris live in fear on both sides of the line of control, which is the de facto border between Indian and Pakistan-administered Kashmir. The dispute between the countries dates back to 1947, when British India was partitioned into two new states and left Kashmir's status unresolved. Since then, the conflict has sparked 3 wars, multiple armed uprisings, and repeated military confrontations. लेकिन उसकी आवाज़ बहुत खौफनाक आवाज़ थी, पूरा इलाका हिल रहा था। ये 3 लगे इधर। Ishrat Mahmood had just heard the dawn call to prayer when bombs started falling around his house. मैं भी गिर गया और मेरी बेटी भी गिर गई इधर। फिर बेटी को उठा के मैं अंदर रखा। इधर मेरी बहू ने चीख की आवाज़ सुनी। फिर When he ran inside, he found his son Osama covered in blood. यहाँ पे मेरे बेटे का बेड था, उनकी नई शादी हुई थी। मेरी बहू इधर ही थी, उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसको खराश तक नहीं आई है। अब बम का टुकड़ा कोई आके मेरे बेटे को लगा। Osama had gotten married just 2 weeks before he was killed. सब खून ही खून था, तो मैं गिर गया। फिर उसने मुस्कुरा के एक बार मेरे तरफ देखा, दम तो उसका निकल गया था। एक बार उसने देखा, हिला तक नहीं है वो। Ishrat and his family live in Bagh, in Pakistan-administered Kashmir, about 40 kilometers from the line of control. Ishrat's 2 youngest daughters were also injured in the attack and taken to the hospital. ये देख लें, ये मेरी जो मेरी बहू थी, ये उसके कपड़े सब जले हुए। ये आप कपड़े देख लें उसके, ये अंदर बिल्कुल अलमारी में थे। देखो इनकी क्या हालत हुई है। ये सब तो उसी शेलिंग के साथ ये ख़त्म हुआ ना। ये सुराख सब नज़र आ रहे हैं। ये देखो, ये अबाबिल के बच्चे हैं। ये इधर सब खिड़की टूटी हुई है। इनका भी घोंसला आधा टूटा हुआ है, लेकिन इन बच्चों को कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदगी देने थी, ये बच गए। जैसे थे ये वैसे ही रहे। तो शादी, उसकी शादी बहुत धूमधाम से शादी किया। उसकी शादी की मम्मी आएगी, वो देखेंगे, हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? हमसे तो नहीं देखा जाएगा। उठाना उसने मुझे चाहिए था, लेकिन मैंने उसको उठाया। मैंने उसकी कब्र में जाके मिट्टी फेंकी है, कब्र में डाला है। जब वो पैदा हुआ तो मुझे इतनी खुशी थी कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। अपनी जान से भी ज़्यादा उसको चाहता था। उसको फेमस होने का बहुत शौक़ था। तो देख लो, पूरी दुनिया पे वो फेमस हो गया। Both India and Pakistan have given competing claims on the total death toll from the fighting, but at least 70 people have been killed across both sides of the line of control. इंडिया वाले तो वो काफिर लोग ये कहते हैं कि हमने तो वो दहशतगर्दों को मारा। वो दहशतगर्द था, मेरा घर देखा आपने। और मोदी को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि वो दहशतगर्द था। उन छोटे बच्चों पे, मुसलमानों पे ये जुल्म ना करे। बस ये जुल्म और ना करें। देखो वो कितना खूबसूरत नौजवान बेटा था। Approximately 17 million people live in Kashmir, the majority of them Muslim. Kashmiris on both sides of the line of control share historical roots, family ties, and a language. Many of them feel forgotten by the countries that administer them. दोनों तरह से हम बोलते हैं अमन हो जाए। उनका क्या है, वो तो बोलते हैं जंग करो जंग करो। जब जंग होता है, वो अगर आके उस टाइम इधर देखें क्या होता है, तो फिर उनको पता चलेगा क्या है। देखते वो मरते हैं, देखते हम लोग हैं, मरते हम हैं ना। बेगुनाह लोग मरते हैं, गरीब लोग मरते हैं। Misra and her family share a single house with their sister-in-law and their children. It sits in Uri, a town in Indian-administered Kashmir. For years, Uri has been on the front line of shelling, raids, and crossfire between the countries. उसकी बारूद की स्मेल ऐसी आ रही थी ना, उस रात को जैसे क़यामत सर पे गुजरी हो। यही लग रहा था सुबह नहीं देख पाएंगे। हम तो यहाँ बचे ही नहीं होते। अगर हम यहाँ पे होते तो दोनों फैमिलियों के जनाजे होते आपको मिलने के लिए। On May 8th, Misra Begum woke up in the middle of the night to the sound of bombs falling around her and her children. Pakistan had launched retaliatory strikes. तो ये जो 2 कमरे हैं, हम 2 फैमिली रहती हैं इसमें। इधर ही मेरे बच्चे पढ़ते थे, इधर ही हम सोते थे, सब कुछ इसी रूम में। तो सब कुछ यहीं पे ख़त्म हो गए। बच्चों के पेंसिल, बच्चों के बुक्स, ये छोटी लड़की की चीज़ें, चूड़ियाँ, कुछ ऐसे ही सामान है। ये इसका बच्चा, इसका यही ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पे एक बिस्तरा था, वो उठा के वो रखा है, हमने बाहर डाला है। उसको डर लगता है इसमें आने में भी। अंदर ऐसी हालत में क्या कैसे आएंगे? ये देखो, यहाँ से ये पूरा फट गया है,
मैं और मेरी लड़की इसी दीवार के नीचे थे। 12 साढ़े 12 से शुरू हुए, मतलब शेलिंग होनी, तो 2 बजे तक आगे ये लड़की मुझे ये छोटी रोने लगी, बोलने लगी उठ के भागो। बोला था हम ड्रिल करवाएंगे, हम सिखाएंगे क्या करें। ड्रिल हमें सुबह मिली 2 बजे जब हम भाग रहे थे। फिर इन्फॉर्म करनी चाहिए थी ना, या कश्मीरी हो या हिंदुस्तानी, जान सभी की है। The town used to have more government-built bunkers available for civilians, but many were destroyed in the 2005 earthquake. Mr. and Namarik's families feel like they have nowhere to run. इतनी मुश्किल से बनाया दोनों भाइयों ने, पैसा भी आजकल इंसान के पास है ही नहीं। किसी को भी नहीं सुकून है। हम बड़े डरते हैं तो छोटों की बात ही नहीं है। वो मुझे बोलती है मम्मा मैं क्या दुआ करूं, मुझे क्या बोलना है, मैं क्या बोलूं, अमन हो जाए। अल्लाह करे वो कभी ऐसा टाइम ना आए किसी पे भी, किसी को हमने देखा वो दूसरा कोई ना देखे।